Hello, everyone, and welcome to another fantasy match preview. This time it's for the game between Birmingham and Trent. Many of you came on top with that base team yesterday. I could see a few GL winners, so it was a good morning to wake up to. And I hope we can have another good preview today. Yes, for a change, one good, decent game. Most of the things worked as per some logic. But yes, let's not count the eggs before they hatch and Yes, continue to be on both sides of safe and risky. totally. So we have the base team for you guys set for this Yes, specific game. So we'll discuss the base team first, and then we'll look at the options, the pitch, ground dimensions, all of that we'll yes, cover through the preview. bilkul. So this is a base team that we have in mind currently, and we have gone with the inform keeper and Tom Kohler Cadmore. We will Wade and Chris Benjamin do have certain numbers that favor them, but we are trying to go with the form man in this section. Bilkul. I think what's important to realize is the game is at Edgbaston. We see runs being scored here traditionally, and Birmingham love playing here. Be it Will Smith, be it Moeen Ali. Benjamin has a great record at the venue. So does Will Smith while batting first. But there are प्रॉब्लम्स एंड सम नंबर्स दैट यू वांट टू लुक एट इट जैसे आपको देखना है जैसे टीकेसी विथ एलेक्स हेल्स एंड डेविड मलान अगर हेल्स पहले आउट होता है तो टीकेसी आ जाएंगे और अगर मलान पहले आउट हो जाता है तो यू विल सी द लेफ्ट हैंडर कम इन तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर कि मुंड्रो को लेना है या क्या टीकेसी को लेना है तो दैट्स अ कॉल आई लीव अप टू यू गाइस फॉर बेंजामिन आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू ट्राई पर अगर आपको लगता है कि शुरुआती में मूवमेंट होगा or one of Benjamin and Will Smith can get out to Luke Wood or Daniel Sams early in the piece, so you can do that. I'm sure Samit Patel will bowl at both of them. Especially Will Smith के numbers against Hmm. left arm spin इतने अच्छे नहीं हैं पर ये 100 है इधर कुछ भी होता है तो वो भी मान के चलना कि see that's I'll just give you one very good example of the match yesterday when James Wills was batting at the other end सामने विकेट जा रही थी they were taking risk getting out to Reece Topley, but James Wins never got to strike. अगर जेम्स विन स्ट्राइक पे होता तो शायद वो भी आउट हो जाता तो दैट इज समथिंग दैट यू एंड मी कैन नॉट कंट्रोल तो नए बॉल से विकेट आज भी गिर सकते हैं पर क्या पता विल स्मिथ दूसरे एंड पे अटक जाए और एक एंड से विकेट जाते रहे सो बैक योर विजुअलाइजेशन आपको क्या लगता है होगा सो आई थिंक वी डिस्कस्ड इनफ नंबर्स फॉर ऑल इन टर्म्स ऑफ बेंजामिन ऑल्सो टीकेएलसी ऑल्सो और मैथ्यू वेड फर्स्ट इनिंग्स में तो भाई हमेशा किसी एक टीम में कैप्टन होना ही चाहिए Yes, and another key point is we were discussing about how the Birmingham top order is structured. एक और बात यहाँ पे ये है कि मोइन अली can come one down. तो अगर मोइन अली आके settle हो गए तो समित पटेल के overs also can get cut in that scenario. So you have to think about every such scenario, especially when you're making GL teams. और इस मैच में तो मैं बोलूंगा स्मॉल लीग में भी आपको कॉम्बिनेशन इशू नहीं होगा आप बोलोगे सब थोड़े ऑब्वियस पिक्स है यहाँ पे पर Hmm. दैट इज दिस इज वन सच गेम जहाँ पे स्मॉल लीग इज वेरी वेरी ट्रिकी एक प्लेयर आपका गेम आज डिसाइड कर सकता है दिस इज वन सच गेम Yes. So we'll look at the batting section. We have gone with Alex Hales, David Malan and Liam Livingston. Again, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है तीनों ठीक ठाक फॉर्म में स्पेशली हेल्स और मलान एंड जो आपके दूसरे ऑप्शन है सेक्शन में थोड़ा इन मतलब विल स्मिथ को आप छोड़ोगे बाहर जो ऑब्वियसली फॉर्म में बट उसके अलावा बाकी सब प्लेयर्स एक आध नॉक यहाँ वहाँ बट कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई अब तक हाँ देखो विल स्मिथ को जैसे हमने कॉल बोला सी हर बार टीकेसी मलान और हेल्स रन स्कोर नहीं करेंगे रॉकेट्स के लिए कभी कभी उनके भी जल्दी विकेट गिर सकते हैं सो दैट इज अ कॉल दैट कंप्लीटली यू हैव टू टेक के कंडीशंस आज क्या हैं कैसी हैं शायद क्लाउडी और ओवरकास्ट होगा और अगर ट्रेंट रॉकेट्स पहले बैटिंग करते तो केन रिचर्डसन इज ऑल्सो वेरी गुड गाय टू ट्राई आउट एज कैप्टन क्योंकि नए बॉल से ही कुड गेट मूवमेंट फॉर यू तो बैक योर थिंकिंग बट इफ यू वांट टू गो विथ फॉर्म प्लीज पिक विल स्मिथ बट यही है इस गेम में ऑप्शंस बहुत है तो whoever you are going with be very sure and don't go by what everybody else is saying go with what your heart feels कि भाई आज मुझे लगता है ये होगा go and follow that Yes, so that brings us to the all-rounders: Moeen Ali, Daniel Sams, and Benny Howell. Again, Benny Howell has not got so many wickets, but if you whoever's been watching the games, his bowling has been pretty good, so we can expect that from him. Here, the point of consideration is if you're not picking Will Smith, you can go one of Summit or Gregory if you feel like Moeen Ali will set in if he's your captain or vice captain in a team.
then maybe you can leave out someone like Samit and go with Gregory, because in that scenario he'll have to bowl more, especially because Root is not present today. बिल्कुल. So maybe while bowling first, Gregory could even go Jai Mata Di and take 3-4. Yes, that is very possible with him, especially because if you've seen the blast, he does come in and Yes. bowl at the death also randomly at times. So you can never say. Yeah. Those are the three all-rounders. Then the three bowlers we have gone with, again, Foreman, Richardson, and Wood. And Shamsi, we know that he's not got too many wickets till now, but when his day will come, he'll come and strike massively. And again, like we always say, when he has a big score on the board, second innings is a good GL captaincy or vice captaincy choice. Bilkul. I think one thing that you can probably play around with is, see, Imran Tahir also hasn't got enough set of bowling Hmm. because the options that Phoenix have. So Phoenix actually have more bowling options as compared to batting. जो चेंज हो सकता है शायद यू कुड सी कार्टर प्ले टुडे क्योंकि काफी लेफ्टीज हैं Lefties. बर्मिंघम के Hmm. पास भी तो कार्टर कुड कम इन एंड टेक अ फ्यू विकेट्स यू कुड इवन गो विद समथिंग लाइक अ लूक फ्लेचर अगर इफ दे आर अर्ली विकेट्स फॉलिंग तो लूक वुड और लूक फ्लेचर जैसे पहले गेम में करा था उन्होंने इन द गेम बिफोर दिस वन Super कि Chargers, yeah. Hmm. दे केम इन एंड टुक विकेट्स दोनों दो दो ले और किसी को पता नहीं चला टाइप तो वो भी कर सकता है क्योंकि बर्मिंघम की बैटिंग थोड़ी थिन है तो जो भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो अगेन ये हम लोग हेल्प आपको स्मॉल लीग के लिए तो कर ही रहे हैं बट द पॉइंट इज फॉर ग्रैंड लीग्स दिस इज हाउ मे बी यू कैन विजुअलाइज योर टीम दैट इफ बर्मिंघम फिनिक्स इज फेलिंग who are the possible heroes तो आई थिंक सिनेरियो Hmm. लो अलग अलग हीरो पकड़ के मल्टीपल कॉम्बिनेशन डालो लीडरबोर्ड कॉन्टेस्ट में क्योंकि दिस गेम्स आर आई थिंक मच बेटर फॉर ग्रैंड लीग्स एंड लीडरबोर्ड कॉन्टेस्ट देन दे आर फॉर स्मॉल लीग्स Yes, absolutely. No difference of opinion there. So basically, this is the base team that we have set up. And now the last choice that you have to make currently is between Will Smeed and either of Summit or Gregory. So for now, we are slotting in Will Smeed in terms of balance that we can get from the team. And then we look at the captaincy or vice captaincy choices for this one. So Nikhil bhai, do you think like Moeen Ali should be the man, especially because of the lefties that he has to bowl to, or you want to go with someone like Sams for his death bowling? uh, one thing that hasn't happened in 100 so far is wickets in the death overs. तो वो एक चीज Yes. याद रखना किसी एक गेम में होगा मोइन लव्स प्लेइंग एट दिस वेन्यू बहुत अच्छे नंबर्स है उनके तो इफ यू फील के see usually now with Moeen you go with him when he's batting first because he gets a good score then comes in takes wickets while bowling first his bowling is dependent a lot on how the other bowlers go to begin with जैसे अगर समझो रिचर्डसन ने पहले ओवर में विकेट ले लिया तो फिर मोइन अली का मैचअप अगर मलन आउट हो गया है तो मोइन अली में नॉट बी नीडेड टू बोल बट ही हैज वेरी Hmm. गुड नंबर अगेंस्ट नॉट वेरी गुड ही हैज गुड नंबर्स अगेंस्ट हेल्स ऑल्सो तो ही कुड पोटेंशियली गिव यू अ गुड 5 सेट और 10 सेट अप टॉप और एक भी विकेट ले लो तो आपका काम हो जाता है तो लाइक इन मोस्ट बर्मिंघम फिनिक्स गेम्स योर कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस आर गोइंग टू बी मोइन अली एंड लिविंगस्टन इन नॉर्मल 99 केसेस अगर आपको लगता है कि नहीं दे आर बैटिंग फर्स्ट और दोनों में से कोई एक ही चलेगा तो उसके साथ आप जाओ और डैनियल सैम्स 2 गेम में 3 विकेट ले चुका है एक ओनली द लास्ट गेम वाज व्हेन ही डिड नॉट टेक एनी विकेट सो दैट्स अ कॉल दैट यू कैन टेक कि जो पहले बॉलिंग कर रहा है आई थिंक दैट माइट बी अ बेटर ऑलराउंडर टू बी केप्ट एज कैप्टन एंड देन दूसरे को यू कैन मेक एज वाइस कैप्टन Yes, and interestingly, like some of you are mentioning in the comments, the number of wickets falling in the death are not too many in 100. या So on an average, about so if you see in the last 20 balls of most T20 games, you see at least 3, 4 wickets falling, 2, 3 even on a regular day. But here, from the numbers that we have till now, only about 1.5 to 2 wickets have been falling on an average. So या yes, maybe death bowling options have not been as reliable in this tournament. So for now, we're going with Ali as captain and Sam's as vice captain. Maybe if Sam's doesn't bowl first, then we'll switch him out for someone like Livingston. बिल्कुल सी द थिंग इज लिविंगस्टन कुड आल्सो बोल अ लॉट ऑफ स्पिन टुडे एंड ही बोल्ड मोर देन इमरान ताहिर आल्सो इन द लास्ट गेम तो इमरान ताहिर becomes your very good differential option I think in this particular game you have more differential options in bowling as compared to batting Yes, absolutely. So we can discuss, like we discussed, a few differential options. Lewis Gregory, if he's bowling first, is a good differential. Samit Patel, if you feel like he's
going to, if he's going to bowl more and I feel like Ali's going to get out early, then Samit Patel is a good choice. And apart from that, Tahir, if he's bowling second, and if we see that Birmingham are playing a bowler shot because maybe they want to beef up their batting too. Yeah, possible, possible. Great. So that was a discussion from us. Apart from that, you guys are asking for the pitch time and the ground dimensions. So I'll just show them to you. So this is the Edgbaston cricket ground, and it's pretty much short on one side and longer on the other end. So it's not like any boundary is extremely short except for this one square boundary, which is 63 meters. Apart from that, most of it is pretty even out. Yeah, I think the venue is still relatively, अगर आप देखो तो छोटा है. Most of the boundaries are in the 60s और Hmm. एक ही पार्ट है जो 70 के ऊपर का है. तो शायद सिक्सेस ज़्यादा इजी हो यहाँ पे मारना एज कम्पेयर टू फोर्स. Yes. And okay, the leaderboard contest that Nikhil Bhai is Yep. talking about is basically the fan to play leaderboard contest. So here, Yes. basically, you are able to strike to the bikes and the scooters if you get really good ranks, and even if you are not right at the top, you still have mobile phones, smart watches, and headphones right there on offer. So if you want to Yep. join this contest, you can join it right away from our description. We have the link attached right there for you. Yes, and the reason why we are telling you to play here is again the option of having five all-rounders is not there on many platforms और credit issue भी नहीं होगा, तो you will be able to easily make a team of your choice. तो multiple combinations, different scenarios, different heroes जैसे अपन ने बोला, go ahead, make multiple teams. Kal, I think a lot of us missed out on Grand Leagues because of Reece Topley not being the vice captain. So that it tells you when the good game comes, it will come massively. But I think for now, we take the good analysis also to go with it. वो बड़ा गेम तो जब आना है तब आएगा, but as long as we can get better in terms of giving you valuable inputs, that is the first preference. Yes, totally. And we're open to taking all your questions now. Yep. Also, I see quite a lot of love in the comments in the form of saying that you made 10 changes and 11 changes to my team and one. Well, that's great for you. Then I hope you can give me your team and maybe you can come on this side and we're happy to hear your opinions. Yeah. Maybe why would you share then? Just keep winning Grand Leagues. Free wickets for Wood and Fletcher in the death if top order goes around 75 to 80 balls. Very fair assumption because if you see the Birmingham bottom order, like Nikhil Bhai mentioned, they're very thin on batting, so it's pretty much possible that this can happen. So yes, you can try that in GL. Maybe they can be captain, vice captain too. Yes. को कैप्टन बना के चलूं तो ठीक होगा. मैं दो टीम से खेलता हूँ. सो निखिल भाई ने कहा उनका स्टैट्स फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा बेहतर है. सो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट इनिंग्स में ट्राई करें तो बेहतर है. बट स्मॉल लीग्स के लिए ये फिर भी रिस्की होगा क्योंकि वो अपने नॉर्मल बैटिंग पोजीशन या पे नहीं चल रहे. तो हाँ, तो वो अगर पॉइंट से उनको थोड़ा चलना रिस्की. है तो इट हैज़ वो जैसे पिछला गेम हुआ था, वापस अगर आप वैसा सिनेरियो इमेजिन कर रहे हो कि नए बॉल से विकेट्स गिरेंगी एंड देन वेड को काफ़ी लंबा समय मिलेगा बैटिंग करने का, तो फिर आप खेल सकते हो. बट आई थिंक दिस कैन स्टिल बी योर टीम टू. बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज़ बिल्कुल अपने दिल की सुने. Chris Benjamin has done well while batting second in the T20 Blast. So yes, that's a fair call. And like we just discussed, some of his numbers against left arm spin are not bad at all. He's not been dismissed before, so I guess it's a fair call to especially have him in the second innings, and maybe in the first innings you can go with Wade. बिल्कुल. और एक और बात जस्ट टू ऐड टू द फन कि एडम रॉसिंगटन वाज ड्रॉप्ड yesterday and then he scored a 15 ball 50, so that is life. Not every time everybody gets a second chance. He got a second chance, he made the most of it. तो अगर आपने लिया है और वो चल गया तो आप बोलोगे वाह क्या पिक थी. पर अगर आपने लिया और वो ड्रॉप होके नहीं और कैच पकड़ लेते तो भी पिक आपका लॉजिक क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट. And to आई stick थिंक to वो that logic. यस आपको लॉजिक के साथ रहना चाहिए. रिजल्ट के बेस पे आपका प्रोसेस चेंज नहीं होता, आपका प्रोसेस के बेस पे रिजल्ट चेंज होता है. तो वो एक बात मतलब उससे मायूस ना होना कि अगर आपने पेपर को लिया है किसी और को लिया तो भाई ये क्यों चला, तो दैट इज नॉट इन योर हैंड, राइट. यू जस्ट हैव टू बैक ओके दिस इज व्हाट आई थॉट, दिस इज व्हाट हैपेंड, ओके ग्रेट फाइन.
Differential high risk captaincy options. So, like we mentioned, the spinners in the second innings, Shamsi especially, because when he has a big score up top, he can do well. In the first innings, someone like Benny Howell can be a good differential. और अगर आपको एकदम ही रिस्क जाना है, पूरा फुल जय माता दी करनी है, तो जाइए कॉलिन मुंड्रो के साथ, जाइए टीकेसी के साथ। अगेन बट दिस हैव टू बी वेरी सिनेरियो स्पेसिफिक। आपको आपकी टीम वैसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लेयर्स आपकी टीम में होंगे नहीं होंगे इनकी एश्योरिटी। टीकेसी तो फिर भी होंगे, बट रूट नहीं है, तो मुंड्रो अगर मलान अच्छा खेलता है तो मुंड्रो ज़्यादा टाइम तक नहीं आएगा। एंड मुंड्रो ऑल्सो हैज़ ट्रबल्स वैसे ऑफ स्पिन, तो मोइन अली लिविंगस्टन दोनों मुंड्रो को डाल सकते हैं। तो जो भी आप सोच रहे हो, तो ये डिफरेंशियल ऑप्शन है आपके पास। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विल कम विद कॉलिन मुंड्रो, बट कॉलिन मुंड्रो, टीकेसी, क्रिस बेंजामिन, लुइस ग्रेगरी, ये तबरेज शमशी, इमरान ताहिर, काफ़ी ऑप्शंस है। बट 100 का प्रॉब्लम एक ही है कि आप अश्योर्ड नहीं हो कि कौन कहाँ पे कितना बैटिंग और कितनी बॉलिंग करेगा। दैट इज द ओनली कैवियट एंड द बिगेस्ट कैवियट इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू मेनी रिस्की ऑप्शंस। मतलब वो टीम आपकी Yes, सीधी विनिंग जोन के बाहर रहेगी, तो दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर। क्या चल गई तो बहुत ऊपर रहेगी 1% में, पर नहीं रहेगी तो बॉटम में भी हो सकती है। तो इफ यू आर हैप्पी विद दैट, if we're प्लीज ready गो to एंड take टेक that. रिस्क। या I was expecting Rockets to win four in a row or for Phoenix to upset them. So I am backing the Phoenix for this game. Waiting to hear your opinion on this. हाँ, काफ़ी प्रेडिक्टेबल तो नहीं है 100, वो तो आई थिंक हम सबको पता है। बट आई थिंक लंदन स्पिरिट्स बता रही है कि इफ़ यू हैव मोर पीपल इन गुड फॉर्म यू फाइंड अ वे टू विन, वॉट Hmm. एवर द वे इज। तो वो एक चीज़ खाली मैं सोचूंगा कि अगर इवन इफ आई थिंक बर्मिंघम फिनिक्स कैन विन, शायद दो टीम के साथ खेलूं, एक टीम रॉकेट्स के फेवर में, एक टीम फिनिक्स के फेवर में। Fair enough. If Birmingham bat first, Mead captain and Shamsi vice captain, a good Grand League choice. Very fair choice. If या the like we discussed, if we feel like Summit is going to be played out well, then surely Smead becomes a good choice. बिल्कुल, देख ओपनर है, ओपनर का रिस्क हमेशा ये होता है। देखिए फाफ कल चले, दैट वाज अ वेरी गुड कॉल, आई वाज वेरी हैप्पी कि वी सेड कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिन सीमर नहीं है तो फाफ विल बी मच मोर बेटर इन द स्टेट के, हाँ Hmm. मेरा मेन थ्रेड नहीं है आज, तो ही कैन गेट इन एंड प्ले अ गुड नॉक। तो वो डिफरेंस होता है सभी के लिए। So who will win the match? We just addressed that right now. I will make 6 to 7 teams, change captain, vice captain, overthinking collapses. Yeah, that's a fair call because like if you feel like the base team that you're set on, you're confident about it, then it's fair enough for you to do that. Like yesterday, the base team I set, यस, I was confident about it, but then या I was not to that level confident because of the last set of games. So I tried only 2 to 3 different captains. Now if I had, and ironically, Topley was my vice captain in 3 teams, but I did not have Will Jacks as captain in any of my teams at all. So that is what confidence does to you, that when it works for you then you can totally go ahead with it, and if the days it does not work like it has been for me for the last few days, then you make that one folly which touches you hard. ना, सी दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ इट। जैसे मेरे भी कल बहुत टीम से विल जैक्स कैप्टन थे, बट एक टीम में कैप्टन सैम करन थे, एक टीम में वाइस कैप्टन सुनील नरेन थे, दो टीम में तो जेसन रॉय भी थे। तो दैट यू, व्हेन यू हिट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन यू विल विन द जीएल, बट टिल दैट टाइम यू कैन try and see how better Process. you are, Hmm. how better you are getting at getting those, getting that big prize. It's not easy. इतना easy आ रहा होता तो it would have been very very easy for every one of us to get there, but it takes time, and when the competition is such you have to play on the right platform to get good returns. तो वो भी काफी important factor हो जाता है कि be very practical in terms of your expectations also. Uh, what advice would you give to newcomers? So, for starters, you should have a thought process in mind about how much you want to invest. Secondly, is that maybe you should not be investing money out of your savings, the money that you use in fantasy, because there is a certain amount of luck factor involved. You should always ensure that it is money that if you lose it, it should not hurt you too much. And then after that, you figure out what kind of leagues you want to play, decide the amount of risk that you want to take. I have a pinned, my first pinned message on the Telegram group explains all of this in detail. So while this might not be the right forum to discuss it in detail, if you have the time, you can go ahead and read that to help you out. बिल्कुल, I'll only say, I'll just add one thing to it.
फर्स्टली डिसाइड हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस फॉर, कितना टाइम तक रहना है ये डिसाइड करो। अगर आपको एक हफ्ते में पैसा चाहिए तो मत आओ, वापस जाओ, वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Be very honest with yourself. It is not a money making machine. Everything, anytime you get money, it has to be hard earned, and there will be some luck factor involved, like it is in every profession. यहाँ पे ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है। यू विल हैव फेजेस जहाँ पे The महीने data होंगे works. जब Hmm. जब महीने होंगे जब आप जैसा सोचोगे वैसा गेम होगा, पर महीने ऐसे भी होंगे जब आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। तो क्या आपके पास, जैसे उन्होंने कहा, इनफ बैकअप है, एंड यू कैन नॉट लेट इट गेट टू योर हेड बोथ विन्स एंड लॉसेस। रिजल्ट से डिटैच करके प्रोसेस से स्टिक करो, तो यू विल बी इन इट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। छोटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, कॉन्टेस्ट बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, बट होमवर्क रेगुलरली करना पड़ेगा, तो ही इसमें आप ज़्यादा समय तक रह सकते हो। Looking at Milan and Hale's form, can we go with opener +5? Very fair call to make, but you know that like I'm not saying that this will happen Mhm. today or it's law of averages or anything, but the time that we tune ourselves to that one-sidedness, that is the day that it can actually turn apart. So yeah, it's fair enough for you to try it in a few teams and go with form, but not something that you should do across your 15 or 20 teams that you make. बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जैसा सोच रहे हैं वैसे बाकी सब भी वैसा ही सोचने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म है और सब है। तो इसमें मे बी यू कैन इवन गेट 5 ओपनर प्लस 5 के साथ आप एक नंबर 3 ले लो, या एक डिफरेंशियल बॉलर ले लो, या एक ऐसा बॉलर ले लो कि यार ये नहीं चला पर ग्रेगरी चल गया। तो अगेन दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल चेंजेस दैट यू कैन मेक, एंड सो योर ओवरऑल विजुअलाइजेशन रिमेन्स सेम, बट मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे तो बिल्कुल फर्स्ट बैक व्हाट यू थिंक, एंड देन मेक मोर कॉम्बिनेशंस टू कवर फॉर दोस गेम्स। Okay, so the last question is Moin hasn't scored a single 50 since 2019. So that's fair enough that he's not made a 50, but we also have to see that now is 50 the inflection point for you in terms of fantasy value? Maybe not. For us, even a 30 is an inflection point, especially if that guy is bowling. So if he's scoring 30 and giving us one wicket, on most days he'll still help you at least touch the top 10 ranks of a mini GL if he does that much well enough and your combination works. So maybe don't overthink it too much, especially because there are also left-handers in front. If he does not bowl on the day or anything of that sort, that is not something which is in your control. बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक फेयर कॉल है, बट आपका असम्पशन भी एकदम फेयर है, क्योंकि आप डेटा के साथ जा रहे हो। तो जो भी आपको लगता है, जैसे हमने बार-बार कहा है, जो आपको लगता है उसके साथ जाओ, और जो अगर आपको लगता है कि हाँ, ये भी सही कर रहा है, उसको टीम 2 में ट्राई करो। तो फिर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ आल्सो कि ऐसा कोई राइट रॉन्ग नहीं होता है। किसी दिन डेटा चलेगा, किसी दिन गट फील चलेगी, तो जब तक चल रहा है थाट है। My call for today: Heels will be dropped and will go big. Ali will get Malan. So we have been thinking about the fact that Malan will get out to an off spinner since a while, but that's not been happening. So yeah, maybe बट maybe today पिछले is the गेम में day. हुआ था, पिछले गेम में हुआ था, मोइन अली नॉक्ड ओवर डेविड वाला। But that's the Yes. thing. The catching is so horrible in this league that I think that's enough. Almost every game you see enough chances, and that's luck. That's something that you can't control. Yes. Don't like we keep discussing. Don't overthink drops when like if you have dropped a player and he doesn't work, then and if his catches get dropped or if he's getting lucky, you cannot overthink those things too much. If you made a bad call, fine, note it down and move on to the next game and don't make that bad call again. But if you made the right call, the scenario worked out well, but a catch got dropped, there was a poor umpiring decision, you should not overthink those things too much. बिल्कुल, रीजा एंड्रूज के साउथ अफ्रीका सीरीज में पहले 4-5 बाउंड्री तो एज से ही आ रही थी, तो उसका कुछ कर नहीं सकते ना, आ रही थी एज से तो आ रही थी, नसीब है उसका। इंडिया के पास कितने प्लेयर है जिनकी एज से बाउंड्री नहीं जा रही बट फील्डर के पास जा रही। इट्स अ फेस, हैपेंस विद एवरीवन। यस एंड फॉर्म तो ऐसी बात है, अभी विराट राशिद आर नॉट इन फॉर्म, तो फॉर्म की क्या ही बात करें अभी. बिल्कुल, जस्ट बैक योर विजुअलाइजेशन, don't be afraid to take risk, but be smart in terms of where you are taking, which player you are taking on, and don't beat yourself too much अगर वो रिस्क नहीं चलता है तो। एज लॉन्ग एज लॉजिक है, रिस्क बनता है। Absolutely. So I guess we can close the discussion then. Thank you so much for all your यस, questions and for tuning in. And we hope we can keep helping you with this feedback, यस, with the base teams, with the pitch and ground dimensions, and to keep winning more. Thank you so much for tuning in, all of you.
Yes, thank you so much. Have a great game. Happy winnings. मैंने बहुत टाइम से नहीं बोला. Happy winnings. Maybe today is the day. Hopefully.